Please continue. So, in the last 5 minutes, I'll just take 5 minutes more. There are two researches I would like to quote. One research is pertaining to one research is pertaining to the person named Masuru Emoto. This Japanese scientist conducted a research amongst the people and their thought process, and how does this thought process affects the water molecules. So in the lab, what he did was he used the frozen water, and he used two types of vessels. In one vessel, on one vessel of water crystals, he wrote some negative connotations, negative words. Whereas on the other vessel, he wrote the positive affirmations. So when he observed both the crystals under a microscope, his observation was that whenever we have the positive frame of mind, whenever the positive thoughts are generating inside our brain, the pattern which is formed by these water crystals is a beautiful structure, just like a ring or a bracelet. All these droplets are actually formed in that beautiful pattern. Whereas whenever the music, whenever the sound is not pleasing, the water crystals were formed in a very irregular and pathetic shape. It was very depressing to see this particular shape. So the effect of music and the effect of water can be collated with our physical body. Our body is also 70% water. So whatever thought process we are having is going to form how and what we think. So it is the thought process throughout the day. Also we call it whenever we get up in the morning from delta to theta state. And then predominantly, the moment we start getting ready, we are getting energized, we do some asanas, we get into alpha theta state. And whenever we go to the office, to our workplace, we are doing work with the computers, there is problem solving, then our prefrontal and frontal cortex is activated. That is called alpha beta state. So the fluctuation, this particular transformation, this particular cycle, I would say, from delta to theta, theta to alpha, and then to beta, should be in that particular frame of reference. It should be slow. This transformation from one state of brainwave pattern to the next should be very smooth. Now, what happens is that if we don't have a sound sleep, or if we get up in a panic form, straight away from delta state to beta state, we are going. As you must have seen, mothers who are getting up early in the morning at 4 a.m., then getting ready themselves, then preparing breakfast for the kids, preparing their lunch, and then doing household chores. She's straight away from delta to beta state of brainwave patterns, which is not recommended. So over the period of time, the person will not be able to have a sound sleep, which is going to indirectly affect his or her thought process, and happiness and health will not be there. So the next big thing in nutrition is not just macronutrients and micronutrients, but the next big thing, as per the latest research in nutrition, is sound sleep, delta brainwave pattern, rapid eye movement. Similarly, from the Indian knowledge system, whatever studies I have done, I've seen that those who are in the habit of doing fasting, intermittent fasting, at least for 18 to 20 hours every other day, are happier than the people who don't do any fasting. Why? Because there is a scientific reason behind this. Whenever we do intermittent fasting for minimum 18 hours to 24 hours, there is a
hormone which is called brain derived neurotropic factor, BDNF, which is released inside the bloodstream. It is nothing but a precursor of growth hormone. Now, whenever there is a more and more release of growth hormone, our immunity increases. I'm not talking about just physical immunity, but the mental immunity. As we all know, that whenever these immunity related cells, which is T cells and beta cells, they are generated, the B cells actually reach our thymus, which is nothing but Anahata Kendra. Hmm. They reach our thymus and there they mature into T cells. That is how our immunity is regulated. So whenever we do pranayam, right, we divide our prana into five parts. Pranapan, Pranapan, Udan, Saman, Vyana. Hmm. So we are not only expanding our prana, but also we are collating that with the seven chakras of the body. So in a sense, that we are activating more and more serotonin to be released inside our brain. So for that, not only physical exercise, physical postures in the form of yogasana, but also the nutrition need to be taken care of. So when I get time some other time, then I'll tell you the connection that how these hormones in males and females are regulated and what is the connection of these happy hormones, oxytocin, serotonin, uh, endorphin, and uh, dopamine have relation with each other. So let me just finish my talk with a conclusion that happiness will come when there is a constant transformation taking place. From scientific point of view, I would like to say that whenever we see somebody with good health, with good physique, for example, if we see a female bodybuilder or a male bodybuilder, what is happening is that oxytocin is actually released. What is being released in the body? It is the oxytocin. So when we get motivated by seeing that person's good body, good physique, and then we try to go to the gym and we try to become like him or her, right? Whenever that feeling comes inside us, it is the endorphin which is being released. And when we actually start doing exercise for 1 week, 2 weeks, or 3 weeks, it is actually the serotonin which is being released inside our body. And when we start loving ourselves, when we start appreciating our body, this is called self love. At this time, it is oxytocin which is being released inside the body. Serotonin is being released inside the body. So, oxytocin and serotonin is collectively released after we have finished the workout. And now we are feeling very calm, happy, and satisfied. And we start appreciating our physique. So, this particular cycle of experiential learning, which is entirely qualitative in nature, must be explored by each and every person. And the yoga is nothing but it is supplementing our thought process to have a positive self image. So, thank you very much. I hope if you have any questions, if there is time, then I'll be more than happy to answer. नमस्कार Thank विक्रम you. सिंह जी, मेरा नाम शंकर। जी। जैसे आपने प्राणापान ये पंच प्राण के बारे में आपने बात किए थे, वुड यू प्रेफर हिंदी और इंग्लिश सर? English, English. Sir, both are okay with me. English is okay. Okay, fine, thank you. Okay, sorry for the interruption. You have been explaining about all the pancha pranas and the connection it has got. Actually, as per our Upanishads and the Atharva Ved one, there is one Upanishad called Bhavana Upanishad, which equates
dissecting this body and dissipating this body into a Shri Chakra or the Shri Yantra. There it mentions about 10 pranas. The another five, Devadatta, Kragaraka, Nagadatta, Dhananjay. Dhananjaya, iti Dashavayavaha. That's how Ah, it concludes. The Dhananjaya, yeah, the Dhananjaya is the final Vayu which goes out of the body. With that, the body completely gets cooled down. The temperature in the body completely gets chilled. So, in the final exit. इसको आप मेडिकल टर्म्स में बैलेंस जो बाकी जो पांच व्हाट अबाउट द बैलेंस फाइव प्राणास और द वायुस यू कॉल इन आयुर्वेदा आई थिंक दे कॉल यू एज वायुस नॉट एज प्राणास दश वायवः so in yoga probably they may call it as prana. So the balance five pranas probably if not in this session for the next session you can enlighten us and correlate it with the medical terminology. this is what I was actually mentioning, that there are gaps in research. People are actually talking only about Pancha Prana and they're not talking about further, as mentioned in the Upanishads. But Yes. whenever we need to connect, see, remember, everything is experiential here. Yes. A person may feel satisfied by conquering the five satyas. But what about the other next five satyas, which he or she has not experienced? That is why we need a guru. So it is extremely important that a guru is there for us to guide further to these pancha prana and then go on to realize, help us to realize these further subtle energies, which every person will experience in their own way. So my emphasis is that we can guide a person, that it is going to be the attitude and experience and belief first. When knowledge is there, unless and until there is a practice, there won't be a belief system. And when there is a no belief system, then the person is not going to have that experience. So from knowledge point of view, Shankar sir, it is very good. From teaching point of view, it is very nice. But when we go to the community at large, when we go to the children, people don't want to listen to the philosophy. They just want to have a minimum understanding, say 10%, and 90% practice and experiential learning. Yes. So this is a point of hybrid research. We call it mixed methods. So whenever we are comparing or we are doing some analytical study or descriptive research, we can always mention further about these five pranayams, as you have mentioned, which are next level to Panchakosha, Panchaprana. Yeah. Yes, sir. Because in Hatha Yoga, Thank you, if sir. you see Thank you for the suggestion. the Hatha Yoga in the subsequent five levels also they decipher. That is how they dissipate the body and dissect the body. Good knowledge. Thank you, sir. Thank you, sir. Because I've just asked this question just for enhancing my little bit yatkinch the alpa jnana I have. That's all. Yeah, knowledge is fine, sir. Knowledge is never bad, but it should be transformed into practice. Otherwise, knowledge is not going to give us anything. Because like you said, the five levels, up to the five levels, there are research materials available. Beyond the five levels, it is not there, and that's the reason I've just raised this question, so that probably if anything is available, I can stumble upon that. That's the only intention with which I have asked this From question. from connecting point of view, whenever I talk to the young generation, I give the example of Swami Vivekananda. Yes. His guru told him not to go too deep into yoga. That so that he said, whenever you leave these physical practices, you leave pranayama, then only you will be able to experience those higher pursuits of excellence in your mind and body. Otherwise, you will stuck in the enjoyment of only physical benefits. Why? Because whenever we do asana pranayama, our body signals us it produces serotonin,
cortisol. So people don't think about the 10 pranayams according to Puranas. So experiential learning by doing, and from knowledge point of view, from research point of view, the mixed method studies knowledge is welcome. We can always mention, but experiencing it is not everybody's cup of tea, sir. It will take a Of course. very, very longitudinal study. And all the effects which are observed in sadhakas are always long term. Long term means years of experience. Then only they experience these next 5 levels. Agreed. थैंक यू सर। यहीं पर रखते हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा व्यतिकरण हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, इस पे आगे हम लोग पुनः रखेंगे। सर का जो अद्भुत उद्बोधन है, 10 जो पंच प्राण है, पंच उप प्राण है, उसकी श्रृंखला अद्भुत है। मैं सर के प्रति बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करता हूँ, बड़े ही सरल शब्दों से और बहुत ही आ, एक गंभीर चिंतन के साथ इतने कम समय में आपने अपनी बात रखी। ये तदर्थ संस्था पक्षतः बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम श्रृंखला में मैं आदरणीय श्री रुद्रेश जी को बिना किसी अधिक का बनाए निवेदित करता हूँ कि आप अपनी बात, आदरणीय श्री रुद्रेश। आप सभी को मेरा प्रणाम और विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उस पर थोड़ा सा बस प्रकाश डाल के उसको आगे बढ़ेंगे। पंच प्राण जो 10 प्राण बताए वो पंच प्राण और पंच उपप्राण है। शंकर जी अगर आप सुन रहे हैं तो पंच उपप्राण में जो है वो देव नाग जो है बोलते हैं, हिकअप्स हमको हिचकी आता है तो उसको नाग बोलते हैं, वो एक उपप्राण है। फिर कूर्म जो है, हम हमारी पलकें जब झपकते हैं, ब्लिंक करते हैं, वो हमारा कूर्म उपप्राण है। फिर हमको जो जम्हाई आता है, यॉर्निंग करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिकल। और फिर देवदत्त है जो हमको स्नीजिंग करते हैं, छींक आता है, उसको देवदत्त बोलते हैं। और धनंजय सबसे आखिरी उपप्राण होता है। तो अगर इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण में आपको समझना है तो ये प्रक्रियाएं ऐसे हैं, जब भी हमारे शरीर में जब प्राण का संचार उचित नहीं है, आप देखेंगे किसी किसी समय पे लोगों को हिकअप्स जैसे हिचकी आता है तो लगातार 2-3 दिन 5 दिन भी आते रहेगा। उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं से नस नाड़ी में जो प्राण का संचार है जो वो बाधित हो गया है। तो अलग अलग तरीके से जीवन शैली से अगर हमारे शरीर में पूरे ये उपप्राण का जो इसको गलत होने पे बहुत सारी समस्याएं भी आती है। लोगों को लगातार स्नीजिंग होते रहना, छींकाते रहना, या लगातार ऐसा हिकअप्स आना, तो ये उपप्राण तो वास्तव में जब हम प्राणायाम पे काम करते हैं, प्राण ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में है, तो उस पे हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और विक्रम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो प्रकाश डाला उस बात पे कि जो डॉक्टर इमोटो के उस पे आपने बताया कि कैसे काम किया था, तो डॉक्टर इमोटो के उस काम से मैं उस पे करके एक रिसर्च पेपर मैंने भी लिखा था। और वास्तव में हमारे सनातन परंपरा में जो मंत्र का प्रयोग है, वैदिक परंपरा में जो हम मंत्र से मंत्रों का प्रयोग करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उसका एक बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है हमारे चेतना के स्तर पे। जैसे किसी को कोई अगर नकारात्मक शब्द बोल दे तो तुरंत ही अपने चेतना के स्तर पे लोग विचलित होते हैं। ऐसे मंत्रों में वो शक्ति है कि चेतना को उतना प्रखर बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है। तो अब वो सर उसका जो शोध जैसा डॉक्टर इमोटो ने पानी के ऊपर किया था, क्रिस्टल्स के ऊपर, वैसा आजकल लेटेस्ट बहुत सारे सैंड के ऊपर भी साउंड का क्या इम्पैक्ट है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को प्ले करके, और सेंट का स्ट्रक्चर में भी वैसा चेंज होता है, वो भी आप सभी लोग सुन रहे हैं। तो बहुत एक सूक्ष्म रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा पूरे विश्व का एक बोलते हैं कि ग्लोबल बर्डन, जो बीमारियों का जो एक बोझ है वो कितना है, मैं वो आपको एक बार को सिर्फ दिखाना चाहूंगा कि क्या अभी स्तर है आज के डेट में बीमारियों का। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो विक्रम सर ने बात किया था ये क्रिस्टल्स का, वो मेरे पास स्क्रीन पे सामने है कि पानी के ऊपर अलग अलग भावनाओं का कैसा प्रभाव होता है, आवाज का, वो कितने व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो जाते हैं। उसका ये डॉक्टर इमोटो का रिसर्च है, वो ये फोटोग्राफ है। और
आज के डेट में जो हम बात कर रहे हैं, तो पूरे विश्व वैश्विक पटल पे जो बीमारियों का एक एक तरह से अगर स्टैटिक्स देखें, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज में 30 इयर्स का जो डेटा कलेक्शन है उसमें बोलते हैं आज के डेट में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज 428 मिलियन, इतने लोग कार्डियोवास्कुलर डिसीज से सफर कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स 349 मिलियन, कैंसर 253 मिलियन है, और मेंटल डिसऑर्डर 155 मिलियन है। तो इस तरह से इतना बीमारियों का बोझ पूरी दुनिया भर में है, और इसका कारण है हमारा जीवन शैली। जिस तरह का हम जीवन शैली में है, वो इसका बहुत मूल रूप से कारण है। तो योग का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, कैसे हम इन सब चीजों से दूर रह सकते हैं, कैसे हम ये बीमारियों के बोझ को कम कर सकते हैं, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने सामर्थ्य में जितना मैं एक बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे हठ योग में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला बात जो है वो बोला गया है कि हमारे आंतरिक अंगों का शोधन होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। तो सटकर्म का मैंने एक विस्तृत प्रारूप बनाने का प्रयास किया है कि हमारे जितने, चाहे वो हमारा आंख है, हमारा नाक है, हमारे कान है, हमारा गला है, जितने भी अंग हैं, उनका की बहुत विस्तृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्रृंखला है। तो सबसे पहले उन सारे अंगों का शोधन करना, जो भी हमारा विकृति है वात पित्त या कफ के रूप में, उन सबको शोधन करके दूर करना। उसके बाद तब फिर आके हम सूक्ष्म आसन और आसन से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, लचीला बनाते हैं। हमारे जितने भी आंतरिक अंग जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सब की कार्य क्षमता को बढ़ाना, इनको मजबूत बनाना, और उसके बाद फिर हम प्रखर हो पाते हैं प्राणायाम में, और फिर ध्यान में बहुत सहजता होती है। तो योग घेरन संहिता में ऐसा प्रकरण में लिखा है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्य सत्य साधनम। तो शोधन करना, उससे हमारे को दृढ़ता मिलेगी। स्थिरता आना, फिर धैर्य होना और हल्कापन होना, वो सब प्राणायाम से होगा हमको। फिर प्रत्यक्ष हम निर्लिप्तम च घट से सब साधनम, इन सब चीजों को प्रत्यक्ष अनुभव कर पाना और एकदम मुक्त रहना। तो ये हमारे शरीर को साधने के सब उपाय हैं, और वैज्ञानिक तरीके से इसको बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आप जितने लोग हैं, रितेश दुबे जी वहाँ पे उपस्थित हैं, और इस सब के प्रायोगिक अनुभव से आते हैं, जो आपको वहाँ पे अच्छे से विस्तृत तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। और सबसे उत्कृष्ट बात यह है कि इन सब चीज़ों में आपको कोई ऐसा निवेश नहीं लगना है। जो चीजें घरेलू रूप से, पानी आपके पास अवेलेबल है, नमक घर में होता है, नींबू होता है, तो बहुत सारी चीजें जो सटकर्म की विधियां जो मैंने दिखाया, वो सब चीजें अभ्यास में प्रैक्टिस करके। तो चर्चा के साथ मेरा एक निवेदन है कि नवभारत परिवार को इस चर्चा के साथ जितना समय दे सकते हैं, उतना हम अच्छे से इन चीजों का ज्ञान का अनुपालन करें, और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखें, साथ में समाज के स्वास्थ्य को बनाए रखें। ये इसी संदेश के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी लोग प्रदीप जी के पुरुषार्थ को बहुत बहुत धन्यवाद कि सबको प्रेरित करते हैं समय समय पे योग के लिए, जितना जो भी आप प्रयास कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए। आशा जी, प्रदीप जी और पूरा नव भारत परिवार, आप सबको प्रणाम। और योग के ऐसे उत्साह को बनाए रखते हैं, और घर घर में ऐसे लोगों को जागृत करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रुद्रेश जी। बड़े ही कम समय में आपने अपने बात को यथा समय अनुकूल रखा। विलंब हो रहा है, नहीं तो बहुत सारी बातें थी उसको हम लोग जानते और साथ करते। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को परिसमाप्ति की ओर अग्रसर करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के परिपाटी में आदरणीय सुजाता, श्रीमती सुजाता मैम को निवेदन करता हूँ। प्लीज आप धन्यवाद की श्रृंखला को संपूर्ण करें। Uh, Good evening to everyone. Jai Sri Ram. Thank you, Navabharat, for organizing this happy and health life. Thank you to our patron Pradeep ji and Asha ji. With your guidance, everything is going well with Navabharat. And thank you, our coordinator, Sri Ritesh Dubey ji, for this coordinating this session. Thank you, our professor,
Vivek ji. And thank you, Rudresh Singh ji. Thank you, Vivek ji, for your inspiring and informative health speech. Your insights were not enlightening, but also incredibly motivating. I truly appreciate the time, effort, and passion you put into sharing your valuable knowledge. It was a privilege to listen and learn from you. Thank you to all the participants who benefit. I hope you all benefited from this session. Hope, over to you, coordinator Ritish Dubeji. थैंक यू। करेक्ट उसमें करें प्रोफेसर विक्रम सिंह सर है, विवेक सर नहीं। ओके, थैंक यू। Sorry for. तो पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्रेश जी, प्रदीप जी और आप सभी लोग, पूरा नव भारत का पूरा परिवार, इस बहरीन देश में किस तरह से संस्कृति के साथ साथ स्वस्थता पर एक विशेष जोर जिनका ध्यान है, आज से 2015 से उसके पहले से भी रुद्रेश जी इस मामले में बड़े एक्टिव थे और आज भी हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग देख रहे हैं एक बड़े कार्यक्रम के स्वरूप में जो भी दिख रहा है, तो उनकी एक कहीं ना कहीं परिश्रम है कि वो चाहते हैं पूरा समाज स्वस्थ हो, अपने इस विज्ञान पूर्ण परिपाटी से जुड़ सके। तो ऐसे दोनों आदरणीय श्री रुद्रेश प्रदीप जी एवं आशा मैम के प्रति भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद रखते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग भारत से भी जुड़े रहे। वहां पर अभी बहुत विलंब 11:30 के ऊपर शायद हो रहे होंगे, फिर भी आप सभी सुने इस सेशन को, क्योंकि विक्रम सर का अद्भुत व्याख्यान श्रृंखला होती है जो हम सभी को कहीं ना कहीं नई प्रेरणा, नया मार्गदर्शन प्रशस्त करती है। सभी के प्रति मैं धन्यवाद पुनः ज्ञापित करता हूँ। और आदरणीय श्रीमती मैम के प्रति भी, जिन्होंने सुजाता मैम अभी जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। सभी को प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। एक अनुरोध है, समय समय पे ऐसी चर्चाएं बनाए रखें, और विक्रम सर से अनुरोध करेंगे कि आप भी सर अपना मार्गदर्शन समय समय पे बहरीन को देते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। संपन्न करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो।